Okay, fine. Now, in last class, we have seen a video for assembling PC component. Yes, sir. Fine. And after that, now we have covered the external part of our computer. Now we have to enter into the inside the CPU cabinet. CPU cabinet के अब अंदर जाना. Yes. And now जब हम अंदर जाते हैं, यानी कि आप सिंपल है अपने CPU कैबिनेट का लीड अगर ओपन करते हैं, in that case you see different components, multiple wires. And for a fresher, for a new student, it is very confusing. यार किधर क्या है? Right, Saurabh? You are smiling. Yes. It is very confusing. But when we will see every component one by one, when we will see the different component of motherboard, and then finally we will do connectivity of different components with the motherboard. जब हम different component को motherboard से connect करेंगे, then वो जो एक heaviness feel हो गया था कि बहुत कुछ होता है अंदर में लगता है. It is just like our stomach. Large intestine, intestine means table, and different component. This one is the multiple thing in my stomach. I am not a doctor. Fine. Now, the first component is our motherboard. Fine, and I'm just going to share my screen. Then we will discuss about it. Fine. Now, this is the first picture of motherboard. First of all, this is just a common picture. Actually, I have selected this picture just for the for reference. Just for okay, it's okay. All pictures are for reference, but I have selected this picture particularly because it has few old components and few new components also. That's why I have selected, because now in these days motherboard structure is very different. Fine. At this motherboard, first of all, look at these points. You all have seen these ports or interfaces? Yes. Yes, sir. From at the back panel of your CPU cabinet. Yes, sir. Back panel cabinet. Okay, so that's why our concept about these ports is very clear. Yes, sir. Yes, sir. Like PS2 port, COM port, RJ45, a parallel port, USB port, LAN port, sound port, power code, audio code. yeah, sound port, audio port. Fine. Yes, sir. yes, sir. Due to the motherboard and motherboard, these interfaces or ports, we are getting few ports from outside of the CPU cabinet. मदरबोर्ड के वजह से ही ये सारे पोर्ट हमें बाहर से दिखाई देते हैं. ऐसा नहीं कि वो सीपीयू कैबिनेट का पार्ट होता है, वो पार्ट होता है हमारे मदरबोर्ड का. बट मदरबोर्ड को सीपीयू कैबिनेट के अंदर इस तरीके से अटैच किया जाता है कि ये पोर्ट सारे बाहर की तरफ निकल जाए, जहां पे यूजर्स जो है अपने डिफरेंट पेरिफेरल्स को कनेक्ट कर सके. एंड वी ऑल हैव डन दैट. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Now we have to study about other components, like CPU socket, mounting point, ATX power, DRAM slot, IDE, north bridge, AGP slot, south bridge,
PCI slot, and CMOS pack. Some common components. Actually, we are studying this motherboard only for the connectivity and just for simple troubleshooting, not for repairing of motherboard. Because Yes. repairing of motherboard is different thing, different study. Okay, so we should know about different slots and ports by which we can attach different internal component of our computer with motherboard. हमें मदरबोर्ड के अलग अलग पोर्ट्स के स्लॉट्स के बारे में जानना है जिससे कि हम उस सीपीयू कैबिनेट के अंदर ही मल्टीपल कंपोनेंट को मदरबोर्ड से कनेक्ट कर सकें. फाइन. ओवरऑल व्हाट इज मदरबोर्ड? एनीबॉडी कैन गेस? ऑलरेडी लिखा हुआ भी है स्क्रीन पे. Yes, sir. Please The repeat again. motherboard is the main component of the CPU for providing the connectivity to the different components. Right. Yes, it is the same line approx. Actually, motherboard is a printed circuit board. It has many circuits. If you see the bottom side of the motherboard का जब आप ये तो फ्रंट साइड है जो ऊपर से दिखता है, जब पलट के देखेंगे तो इसमें दिखाई देगा आपको इट इज जस्ट लाइक अ सर्किट नेट, वायर नेट. ये वायर मल्टीपल वायर्स. फाइन. दैट शोज द सर्किट ऑफ द मदरबोर्ड. बट आई एम कमिंग टू यू सौरभ. Sir, these circuits are, I am coming to you. मैं आ रहा हूँ आपके पास. But these circuits are used to connect these different components as per the picture to each other for the communication of data from one component to another component like CPU, RAM, storage and many things. कि जिससे मदरबोर्ड के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सके, इसीलिए ये एक सर्किट बोर्ड है. एंड वी यूजुअली से द मेन कंपोनेंट बिकॉज मदरबोर्ड में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो सर आपके लिए काफी एक्सपेंसिव भी हो जाता है. आपको मदरबोर्ड ही चेंज करना होता है या फिर आप मदरबोर्ड को रिपेयरिंग के लिए डालते हैं. अगर रिपेयरिंग पॉसिबल है इट्स ओके. फाइन. यस सर. सर नीरज कुमार वेटिंग में मतलब निकल गया नेट डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क. But I have not seen any misses. Okay, just I'm going to check. Yes. Fine. Okay. Motherboard is a circuit board that provides connectivity to different components available at the motherboard or to all those components which are connected to the motherboard. उन सब के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जो मदरबोर्ड पे अवेलेबल है या फिर मदरबोर्ड से कनेक्ट किए जाते हैं. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now, first of all, we will start like this clockwise. And we have covered till this port. Now, CPU socket. CPU socket. What is CPU? CPU is a central processing unit in. CPU is a processor that responsible CPU for is a entire brain operation of our computer. Okay, Vishnu. Fine. Saurabh. CPU is a central processing unit in brain of computer is CPU. And CPU is a operation is logical, arithmetical. Arithmetical. Yes, sir. Logical, arithmetical, and a different process CPU is. Sir, the main function of CPU is to control and coordinate the entire system. Entire system. Good. Good. Something else? Okay, fine.
What you all have told is correct. Really, CPU is the brain of the computer. Yes, sir. It is used for the processing of our data and instruction. Yes, sir. Okay? CPU हमारे कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट है जो कि हमारे डेटा इसलिए मैंने स्पेशली बोला जिससे कि वो डेटा मींस आउटसाइड से आप कोई डेटा दे रहे हो या फिर इंटरनल स्टोरेज पे कोई डेटा पड़ा हो उस डेटा को या फिर जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड माउस और सम अदर डिवाइसेस तो एज पर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा हमारा सीपीयू जो है वो प्रोसेसेस करता है हमारे डेटा के ऊपर एंड फाइनली इट गिव्स आउटपुट दैट आउटपुट कैन बी राइट और रॉन्ग इट डजंट मैटर but it gives output because it all depends on our data and instruction. Output will be right or output will be wrong. Okay. Yes, sir. अब यहाँ पे जो CPU है, CPU is basically a chip. Chip, microchip, and this chip is attached with a CPU socket. It is just like SIM card of our phone. Like we insert SIM card at SIM slot. Yes, sir. Generally, we get 2 slots Yes, in our phone. Generally, if somebody has 1 slot, it's okay. Generally, 2 slots, and we decide in which slot I have to insert the SIM. Whenever we go to insert our SIM, we keep some instructions in our mind that we should insert SIM card properly as per the notch available at the SIM card. SIM card पे notch होता है, cut होता है. Yes, sir. Yes, sir. As per that cut, हम जो है वो SIM card को insert करते हैं. जिस Yes, sir. तरफ से insert करना है उस तरफ से insert करते हैं. Opposite insert करने जाए तो क्या होता है? Insert ही नहीं होता है. अब फिर भी कोई बच्चा पावरफुल है तो वो किसी भी तरीके से इंसर्ट करते थे दैट इज अनदर थिंग सर नाम तो बता दिए थे Yes, sir. Same is a diamonded, sir. Diamond हो जाएगा same. fine so that same concept is used in case of processor and CPU CPU को भी जब हम सॉकेट के ऊपर डालते हैं तो इसमें इस तरीके का कट बना होता है मींस नोच होता है एंड सेम टू सेम आपके स्लॉट पे भी होता है as per the structure of slot and processor we fix our processor above the over the CPU socket but these CPU sockets are of 2 types one is known as PGA pin grid array and second is known as LGA land grid array now in these days all motherboards are available with LGA CPU socket. LGA means land grid array. Okay. Now I'm going to show you some pictures by which it will be very clear what is PGA and what is LGA. Okay. Okay, sir. Everybody is getting my points. सारे लोग Yes, की sir. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes. sir, Fine. Yes. sir, socket. What is a socket? Socket. Simple. आपके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड है? Yes, sir. Yes, sir. Can you Yes, sir. insert your laptop charger on that electric board? Yes, sir. The point at which you insert your plug of your Okay. laptop charger is a Yes, sir. socket. Okay, sir. Like our eyes has also a socket. We fix our eyes into the socket. Suppose that we are God and I have to create a Saurav. Then I will insert your eye into eye socket. Actually, this is the socket. Eye socket. You have studied about it in your matriculation. This is the eye socket. Actually, it is a structure of our facial bone
and in this socket we insert I. So socket, whenever we talk about a socket, socket means slot where we can insert something. Okay. Yes, sir. Okay. Now, yeah, I have to show some pictures too. Fine. Sir. हेलो सर, सॉकेट को कनेक्टर भी बोल सकते हैं सर? कनेक्टर नहीं बोलते हैं, स्लॉट बोल सकते हैं। कनेक्टर जैसे RJ45 कनेक्टर जो किसी में जाके कनेक्ट हो जाए। यस सर। Now PGA, first of all, now yes, see, you all can see in this picture. See this picture. This picture has many holes. Yes sir. Fine. And its name is also clear, PGA479M socket. M socket. Okay. And actually this is a it was used in earlier days motherboard. Now in these days, if you will see some old PC, like I have this kind of PC. So this CPU socket is used to connect all those processors which have pins. Pin, because अगर इधर होल है तो बट ऑब्वियस है इसमें कोई पिन इंसर्ट होगा। यस सर। अब यस सर। फाइन। अब तो ये क्या कहलाया? PGA, पिन ग्रिड एरे। पिन ग्रिड एरे। ओके, नाउ see those processors which can be inserted into this slot. So PGA means pin grid array. Array. Okay sir. Okay, this is very clear. Fine. This is very good. PGA and LGA. Now at this processor, this is a processor which is connected to a PGA socket. It has many pins also. You can see it is Yes, clear sir. at the edge of the processor. Pins, Yes, sir. pins. Yes sir. Yes sir. Okay. So this PGA processor is connected to a PGA socket. Fine. Yes sir. But second type of CPU socket is LGA. LGA means land grid array. Land grid array. Okay. And at this land grid array, this type of processor is connected because it has no pins. It has only dots. In place of pins, it has dots. छोटे छोटे बूंदे बूंदे बूंदा बूंदा। ठीक है, यानी कि समझ लो किसी ने इसी पिन को मेल्ट करके चिपका दिया। Yes ये कहते हैं ना गला दिया, है ना? गल गया तो छोटा छोटा बूंदा बूंदा हो गया। तो Yes, sir. ये डॉट्स बन गए प्रोसेसर के ऊपर। अब इस प्रोसेसर को हम कहाँ लगाएंगे? पिन तो हटा दिया, तो जब LGA हटा socket. दिया तो वैसे के LGA सॉकेट में लगाएंगे। Sir, Yes.
इस बार डीजीए नाम रखना चाहिए था, जैसे वहां पे पिन था तो पिन ग्रिड एरे, तो यहाँ पे डॉट है तो डॉट ग्रिड एरे रखना चाहिए। तो क्या नाम रखना चाहिए था? डीजीए सर, डीजीए Yes, डॉट DJ is ग्रिड एरे। more suitable. बीजीए मींस क्या? डॉट फॉर्म? डॉट array. ग्रिड एरे। डॉट ग्रिड एरे। ओके, Yes. अभी मैं बता रहा हूँ आपको लैंड ग्रिड एरे क्यों हुआ। ओके चलो, हम नेम के लिए हम लोग तो झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बड़ी No, हस्ती sir, तो हम लोग है प्रोसेसर नहीं। मदर no, सर हम बोल रहे हैं कि रखना चाहिए। कटा हुआ है एकदम इसलिए। हाँ, चलो चलो कोई नहीं। सर जस्ट इसमें जो पिन दिया हुआ है, अगर इसमें कोई पिन डैमेज हो जाता है तो वो काम हाँ। करेगा? फाइन, अगर एक भी पिन डैमेज होता है इन दैट केस, हाँ, यू विल हैव टू बाय न्यू प्रोसेसर। Yes. It will not work. इट विल नॉट। फाइन, और डैमेज में बेंड होता है तो चल जाता है। नोज प्लायर के हेल्प, सॉरी प्लकर के हेल्प से, प्लकर बोलते हैं, वो अलग अलग तरह के टोंग वगैरह आते हैं, उसके हेल्प से आई हैव डन इट विथ 2 or 3 प्रोसेसर्स। धीरे धीरे सीधा कर लो। हाँ, सीधा जुगाड़ करके, सर। नहीं नहीं नॉट जुगाड़। हाँ, उसको उसके हेल्प से, ये टूल ही आते हैं उसको करने के लिए। उसको आप स्ट्रेट कर लीजिए, स्ट्रेट करके अगेन जो है उसमें प्रॉपर्ली इंसर्ट कर लीजिए। हाँ, अगर स्ट्रेट करने के चक्कर में ये टूट गया तो फिर गेम ओवर। नाउ तो ये मदरबोर्ड का ये पार्ट्स डैमेज हो जाएगा फिर से कोई काम? मदरबोर्ड का पार्ट नहीं डैमेज होगा, प्रोसेसर का पार्ट। प्रोसेसर का। यस सर, Fine. उसमें जो लगा हुआ है वो। Yes, definitely. Now I'm just searching socket. I think it is clear. Fine. Is it? Yes, it is very clear. Yes, sir. Now this is Yes. land grid act. Now, what is change here? Change is that I can't zoom it more. If you will see it carefully, you will see that there is a netting of wire, Yes, sir. like Yes, sir. as we use in cots. खटिया में यूज करते हैं गांव में, कैसे ऐसे Yes, ऐसे sir. घूमने Yes, sir. के Yes, लिए, sir. है ना? Yes. द सेम थिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वायर जो है निकला, फिर दूसरे होल में गया, फिर निकला, फिर तीसरे होल में गया। फाइन, तो इससे क्या होता है, एक लैंड क्रिएट होता है। Yes, sir. X surface. So that's why its name is land grid. एंड यहाँ पे जो वायर बाहर, जैसे मान लो ये 2 होल्स हैं, सॉरी ऐसे आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये 2 होल है, इस 2 होल के ऊपर हमने पिन डाला तो ऐसा बने। Yes, sir. अब इस पिन के ऊपर, ये जो पिन आपका क्रिएट हुआ, इस पिन के ऊपर व्हेन वी विल फिक्स processor, in that case processor dot will become Touch. in touch or in contact with this wire. Yes. Yes, sir. Fine, with this wire, and in this way your processor will communicate with your mother. Fine. Now, so it is known as land grid. Now in these days we all have LGA socket. That's why we are not talking about LGA or PGA. Simply there is no any concept of pin processor, means pin grid array processor. That is old technology. हाँ, old. Yes, sir. Like अगर आप थोड़ा सा 7-8 years back चले जाएं तो machines आती, ठीक है, बट क्या है ना कि ड्यू टू पैंडेमिक डेवलपमेंट इज स्लो नाउ, बट बिफोर द पैंडेमिक after every 3 months 6 months you will see a new change. Yes, sir. Even now in these days, if somebody has purchased a cell phone today by paying 10,000 rupees, he has got approx 50 features. For example, 50 features. Just after 3-4 months, if somebody is going to buy some another phone at the same cost, he gets approx 70 new features, 20 new features, means 70 features. Yes, sir. It is a technology change, but still we are getting LGA sockets at our motherboard, and with that LGA socket we connect a LGA processor.
Okay. Now, Yes. this is the cover of the processor. Fine. And this handle, I'm talking about Locks. this handle. Lock handle. This handle is used to Lock lever. press the processor at the socket properly and firmly. अच्छी तरीके से प्रेस करके रखता है, because there should not be loose connection between the socket and the processor. It may damage your motherboard, it may damage your processor. Okay, that's why this type of cover and this type of, you can say, handle or lever or lock is used for the proper contact of processor and socket. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Now you all can place the processor at this socket properly Yes. by seeing the notch of the processor sir. and notch of the socket. Okay. Yes, sir. Fine. Now, just above the processor cover, means just above it, this component, just above it, we place a heat sink. We place a heat sink. हम एक heat sink को place करते हैं, रखते हैं इसके ऊपर. What is heat sink? हीट सिंक से जो हीट जो जनरेट होता है और उसके बाद इसको जो निकाल दिया जाता है एग्जॉस्ट के द्वारा. Yes, good, 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 good. Sir, Yes, sir, I have a question. yes. How many pins are there in total? It depends on the socket. It depends on the socket. Its counting is also varies from slot to slot. Now, I think. Sir, heatsink looking like fan, sir. No, I'm just going to explain it. Now see, this one is a heatsink. Fine. This one is a heatsink. Okay. Sir, And silver this is part. Sorry. Sir, the part below the fan. Yes, just part below the fan. That's why I have drawn a line, red line here. Okay. Okay, sir. This one is the heatsink. This part is heatsink. This part is heatsink. And this heatsink is made up of pure aluminum. And it is just placed over the CPU cover. And what is the function of this heatsink? Actually, when we use our computer generates, not our computer, our processor generates a heat. To keep processor cool, heatsink is placed over the CPU cover to absorb heat from the processor. When heatsink absorbs heat, the gaps, you can see gaps. Yes, sir. Yes. In this gap, there is a air. Where there is a gap, there is a air. जहां कहीं भी गैप है वहां हवा है. ठीक है. तो इस गैप में जो हवा है, it becomes hot and goes up. गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है. ये तो हमारा पुराना पढ़ा हुआ चीज है. It goes up. As it goes up, now the cooling fan just above the heatsink. Cooling fan is here. Processor cooling fan. Now it will just take that hot air and exhaust it out. इसको बाहर निकाल, यहाँ से खींच. If this process goes continuously, in that case, always cool air comes inside this heatsink and hot air goes up and out, goes up and out.
right? Yes, sir. In this way, this heat sink and this cooling fan keeps our processor cool. Okay? ये हमारे प्रोसेसर को ठंडा रखेगा. And now, this heat sink and fan should be fixed at the motherboard properly with the help of a screwdriver or anything. Properly fixed होना चाहिए. If there will be a loose connection, again heating problem will generate. And if your processor is getting heated more than the limitation, in that case, it can it will show bad function of your machine, because in that case your machine will go down after 30 minutes, 20 minutes, 5 minutes. और आप कहोगे पता नहीं क्या हो गया. कई बार इसमें डस्ट आ जाते हैं, लूज हो जाता है, ये सीपीयू फैन खराब हो जाता है, तो भी ऐसा केस जनरेट होता है. तो इन दैट केस वी चेक द टेम्परेचर ऑफ आवर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ बायोस के हेल्प से हम टेम्परेचर को चेक करते हैं. अगर टेम्परेचर हमें ज्यादा दिखाई देता है, हमें डाउट होता है टेम्परेचर इतना क्यों. नॉर्मली जब नया सिस्टम लेंगे तो इट इज अराउंड 40 to 50 डिग्री, एंड धीरे धीरे ये 60-70 तक आ जाता है. बट जब ये 80 क्रॉस कर जाए तो वार्निंग लेवल पे आप आ गए. अब आप समझ जाइए, डस्टिंग वगैरह कीजिए, फिर से प्रोसेसर को साफ करके फिक्स लगाइए. ओके, नाउ वन मोर थिंग, बिटवीन हीट सिंक एंड सॉकेट कवर a cooling paste is used. That cooling paste, it is also known as thermal paste. That thermal paste or cooling paste is used just to absorb heat from processor and give transfer it to heat sink. Sometimes this cooling paste becomes dry. कभी-कभी क्या होता है, ये cooling paste जो है वो dry हो जाता है या बिल्कुल सूख जाता है. तो वैसे केस में भी ऐसा होता है. तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको एक साफ चीज से साफ कर देते हैं, सूखे हुए कूलिंग पेस्ट को, एंड न्यू कूलिंग पेस्ट लगा देते हैं. बहुत सस्ता आता है, छोटी सी डिबिया में. ये सब चीजें मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली. ठीक है. नाउ टाइमिंग इज गोइंग टू बी अप. सो सर वाटर कूलिंग हीट सिंक भी आता होगा सर. वाटर कूलिंग हीट सिंक सर. सर अटेंडेंस बन गया. ओ हेलो. हाँ जी, वाटर कूलिंग हीट्स. मैं समझा नहीं बॉस, क्या पूछना चाह रहे हैं. सर जैसे कि सर जैसे सीपीयू जब हीट करता है तो सर मेजर करने के लिए भी इससे भी अच्छा हीट सिंक तो आता ही होगा सर. मेजर एक्चुअली हीट सिंक इज नॉट यूज फॉर मेजरमेंट. मापने के लिए नहीं यूज होता है सर. उस जैसे हीट सर, जो हीट जब ज्यादा हो जाए या नॉर्मल ऐसा कुछ घटना सर. क्वालिटी ऑफ हीट सिंक, डेफिनेटली गुड क्वालिटी ऑफ हीट सिंक जो है वो होना ही चाहिए, और हम ये खरीदते भी हैं मार्केट में. अब देखो, ये डिपेंड करता है, अगर यही सब चीजें आप ब्रांडेड मशीन में देखते हैं ना, whenever you will check it go for the branded machine. In branded machine you will see all components, all cable connectors are of different type, with good quality. But mostly what we do, we buy different components and assemble it. So that's why the performance difference is very high between branded machine and assembled machine. सर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है और कैसे काम करता है? लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है और कैसे काम करता है? लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी किस केस में बात कर रहे हो? प्रोसेसर के केस में? यस सर, जैसे शायद लैपटॉप में या मोबाइल ये सब में होता है. ओनली पीसी में होता है, लैपटॉप में नहीं. स्मार्टफोन में look.
लिक्विड कूलिंग की अगर बात करें तो आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट कि लिक्विड कूलिंग कोई चीज होती है। हाँ, यहाँ पे एक लिक्विड यूज होता है, दैट लिक्विड इज नॉट अ लिक्विड, इट इज इन अ सेमी सॉल्यूशन, यू कैन से पेस्ट, दैट पेस्ट इज यूज्ड इन केस ऑफ पीसी। I have not heard about any liquid material like जो water की तरह liquid हो, that liquid is used in this. Okay, if you have heard, please share with me. Otherwise, I will also check it. But in PCs, I have never seen. Okay. Okay, sir. Now, I'm going to stop my sharing. सर हीट सिंक के टाइप्स भी होते हैं सर? नहीं, हीट सिंक के टाइप नहीं होते हैं। हीट सिंक आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग आता है। हीट सिंक बहुत जगहों पे प्लेस किया जाता है, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ये सब डिपेंड करता है कि आपके मदरबोर्ड पे कितने हीट सिंक लगेंगे और कहाँ किस तरीके का लगेगा। कुछ इनबिल्ट आते हैं, कुछ अलग से माउंट होते हैं। जैसे कि सर हीट सिंक में जैसे कि आ जाते हैं सर एल्युमिनियम, कॉपर, सॉलिड मेटल, इस तरह के कुछ सर? नहीं सर, वेरी गुड, एल्युमिनियम इज द वेरी गुड कंडक्टर। कोई और तरह का हीट सिंक आई हैव नेवर सीन। लास्ट 15-20 इयर्स में 23 इयर्स हो गए, कभी नहीं देखा। चाहे वो बड़े से बड़े सर्वर्स की बात करें या नॉर्मल मशीन्स की बात करें। यस सर। सर इसमें एल्युमिनियम का इसलिए नहीं यूज किया जाता है। लुक माय डियर फ्रेंड, मैं सारे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा फिर से, बिकॉज मेरी क्लास है 10 o'clock से। ठीक है ओके सर। तो अभी आपका अटेंडेंस मार्क करते करते इट विल बी अराउंड 10:15। यस सर। ठीक है, और हीट सिंक दैट नॉट बिग इशू। यस, इट्स नॉर्मल। एंड यू कैन डू समथिंग, गूगल हीट सिंक ढूंढते हैं, बढ़िया वाला हीट सिंक। यस सर। 2000 का। ठीक है, fine. If somebody is saying anything, please say it clearly. Just wait for a minute.